Okay. So like I was saying, Bhairav की उत्पत्ति हुई. Bhairav was created from Lord Shiva. Bhairav means somebody who is fearless, and only somebody who is fearless can eliminate fear from our lives. And like I said, fear can be of different types: fear of losing something, and sometimes irrational fear, which leads to anxiety, which leads to depression. Irrational fear is of what is going to happen in the future when everything is good right now. And most of the people who come to me as an astrologer, most of the people who come to me, some of them are here also. They come to me, दीदी horoscope देख लो, दीदी क्या होने वाला है in the future? अरे कुछ नहीं होने वाला. There is nothing to worry in their life. But फिर भी they are unhappy. फिर भी they are fearful. So all this fear is eliminated by Bhairav ji. Of course, Bhairav, and there is a Bhairav with every deity. And without Bhairav sadhana, whatever you have chanted, all that is taken away. You will never get the benefit of your penance, of your tapasya, till you have pleased Bhairav. Bhairav जो है सबका सब अपने पास रख लेते हैं. For example, if you have to go and meet, say, Modi ji. So before you enter and go to meet Modi ji, you have to ensure that his PA allows you. That work is Bhairav ji's. And again, before Modi ji can be attacked or anything happens to him, his security guards will come and protect him. That is what Bhairav ji does. So Bhairav ji is very, very important. And another very important aspect of Bhairav sadhana and Bhairav is, everybody must have heard of Shani dosh, Mangal dosh, Rahu dosh, Ketu dosh. Generally, when people come, horoscope mein ye dosh hai, wo dosh hai, this is what they come for, right? A lot of that explaining, these things will take a lot of time. We will have to actually that works. But above all of these doshas is Bhairav dosh. Bhairav dosh, and Bhairav dosh is only, generally, it only affects sadhaks. Sadhak means any sort of devotee, devotees or sadhaks. Why? Because as a devotee, as a sadhak, we are more aware of the laws of universe than regular people. We know that we are all connected, that it is the same consciousness pervading in all of us. Then when you are in knowledge of that and still you hurt someone or still you trouble somebody, then naturally, because you've committed a crime consciously, very well aware of the consequences, the punishment is manifold. For example, juvenile criminal gets a smaller sentence. First time offenders get smaller sentence. But repeat offenders, because they know what is the consequence of their action, they get severe sentence. Similarly, when sadhaks or devotees who know that there is God, who are aware of supreme consciousness, who know the difference, who know how to discriminate between right and wrong. When devotees or sadhaks do anything wrong, then Bhairav dosh is what affects them. And Rahu dosh, Mangal dosh, 7 years, 18 years, Shani ka 19 years. Bhairav dosh, how many years? More than 30 births. More than 30 birth. Imagine, no years, 30 plus birth it affects. That is how severe Bhairav dosh is and how it affects. For example, most of you must have been to ashrams, been to temples, and generally you must have met people who know a lot about puja part, sadhana, right? And then you wonder, why are they miserable? Yes or no? This is a very common example that I'm giving. Why are they miserable? Because people who live with gurus, people who live with teachers, people who live in temples, in ashrams, and then trouble others or fleece others for some selfish motive, their crime is much more severe than somebody who's not aware of these laws. Exactly. And what happens then? These people will be born again and again in the same sort of environment. Somebody who is an ashram, an ashram insider in this birth, or somebody who is volunteering or works at an ashram in this birth, if he has Bhairav dosh also,
he will again meet a guru. Again meet a guru, why? Again be associated with the temple, why? Because whatever puja part that person has done, even if it was mandatory, it was a part of the lifestyle, it was part of the routine that they had to follow to live there, but uska apna phal hota hai. All of that has a positive karma. That positive karma will again ensure that this person is born in a similar environment, or again meets a guru, or again learns how to pray. But because there is Bhairav dosh, every birth, this person will be inclined to use this for wrong purpose. All the Bengali tantrics that you see, जो होते हैं ना, मारण कर देंगे, मोहन कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, who are these people? They have powers. They can easily do small things. काम हो जाता है. But they remain poor all their lives. They remain miserable all their lives. And their deaths are always sudden, always akal mrityu, always killed by a spirit. This is the effect of Bhairav dosh. And this is the effect of karma. Every birth they will meet a guru, but again their selfish motives, they keep overpowering. Their free will does not let them choose the right path. And they keep on taking birth in this same cycle. This is the extent of Bhairav dosh. So one must be very, very careful as a devotee, as a sadhak, to not harm anyone. If you harm anyone, and if you come and pray to God, iska bura ho jaye, iska bura ho jaye, this is my enemy. Nobody is your enemy, first of all. We are our own enemies. If anybody you consider to be an enemy in this birth, this enemy is the result of your previous actions. The enemies are not just born like that. So you can protect yourself from enmity. You can protect yourself from the ill effect of whatever you have done, but you cannot even think about destroying somebody, or you should not even think or wish ill for anybody ever. Otherwise, kya lagta hai? Bhairav dosh lagta hai. So to please Lord Bhairav and to nullify all our previous karmas, we do Rudrabhishek. Now we go straight to Rudrabhishek. ठीक है? If anybody has any question, they can ask towards the end. One question I will answer. Gaurav, जो मैंने आपसे पूछा था काली माँ वाला, remind me this after the session. I'll definitely answer this question. एक बहुत छोटा सा incident है that I'll explain. ठीक है? So first, पवित्रीकरण, sprinkle water on yourself and all the pujan samagri. ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतुपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यंतर शुचिः. Now Deepam, Deep ko lamp, pray to the lamp. Om dim dim deepnathaya iti deepam sampujya bhutapasarpanam kritva puja mamrate tadyatha ath dhyanam. Now dhyan, visualize Lord Shiva and his family in your heart or on your agya chakra. Bandhu kasanniban devan trineta chandrashekaram trishula dharinam deva charu hasam sunirmalam kapala dharinam devam varda vayastakam umaya sahitam shambhu dhyayat someshwaram sada iti dhyanam at avahanam. Avahan mudra is this. We will invite Lord Shiva to come and accept our prayers with his family. Adhavahanam ayahi bhagvat shambho sharva twingi rijapate prasanno bhav devdevish namastubhyam hi shankar ityavana at asanam. Now asan mudra is this. Okay? It asanam Vishweshwara Mahadev Raj Raishwa Priya asanam divyam ishan dasya avantu mishwara iti asanam atapadyam. Now water to wash his feet. Mahadeva Maheshan, Mahadeva Paratpara Padyam Grihan Madam Parvati Saiteshwar Iti Padyam At Argyam. Now to clean, wash his mouth. Trambakesha, again water. Trambakesha Sadachar Jagadadi Vidhayak Argyam Grihan Devish Samba Sarvarthadayak Iti Argyam At Achmaniam, again water. Tripurantak Dinarti Nashak Shri Kantashashvat Grihan Achmaniam Cha Pavitrodha Kalpitam Iti Achmaniam At Godukta Sthanam, milk. Madhurangopayah Pandyam Pataputa Puraskritam Snanartham Devdevisha Grihana Parmeshwara Iti Dutta Snanam At Dadi Snanam curd. Durlaban Devi Suswadu Dadi Sarvam Priyam Param Pushtadim Parvati Nath Snane Pratigridam Iti Dadi Snanam At Grit Snanam ghee. Gritam Gavyam Shuchi Snigdam Susevyam Pushtivichitam Grihana Girijanath Snane Chandrasekhar Iti Grit Snanam At Madhu Snanam honey. Madhuram Mridu Mohagnam Sarvanga Vinashanam Mahadevam Utsrishtan Tava Snane Shankara Iti Madhu Snanam At Sharkara Snanam sugar. ताप शांतिकरी शीता मधुरा स्वाद संयुता स्नानार्थ देव देविश शर्करेम प्रदीयते
इति शर्करा स्नानम अथ शुद्धोदक स्नानम वाटर, गंगा गोदावरी रेवा पयुष्णी यमुना तथा सरस्वती आदि तीर्थानि स्नानार्थम प्रतिक्रियताम अथ शत्रुद्रया स्नानम. Now you will pour whatever you want to, whether it is panchamrit, milk with water or just plain water. Okay. हरि ओम भूर्भुवस्व नमस्ते रुद्रमन्यवते ईशवे नमः भाभ्यामुत ते नमः याति रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्वशन्तमय गिरिशन्तापि चाकशिः यामि शिंगिरिशन्त हस्ते बिवर्षस्तवे शिवांगी रित्रतांकुरु मा हिंसी पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिछावदामसि यथा न सर्वं जगदेक्ष्ण सुमना असत् आद्य वचो दधिवक्ता प्रथमो दैव्य वैश्यक अहि गुंश सर्वान् जमहेत सर्वाष्टि आतु धनुधराची परसुव असो यस्ताम्र अरुण औत बभ्रु सुमंगल ये चेन रुद्र गुंग रुद्राभितु दिक्षु सहस्रशाम गुण महेड में असो सर्पति नीलग्रोविल होता उद्यान गोपाल दृशनु दहारे सदृश मणाति नमः नमोस्ते नीलग्रह सहस्त्राक्षय मिडुषे अथो यसत्वानो तेभ्यो अकरम नमः प्रमुंच धन्वस्तिभिर आत्मजामे याश्चति हस्त ईशवार ईशवः परात भगवः विजयन धनु कपर्दिन विशल्र प्रणवा तेन शन्य से अन्य शन्य से या ईशव आभुर संनिषंगिति याते एतेर मिदुष्टम हस्ते बभुव ते धनुः तया स्मत्वमेक्ष्म परिभुजे परिते धनुः हेतिर् स्मार्ण विणक्तु विश्वता अथो येष्टिस्तारस्मिन् दहितम् अवतत्य धनुष्वसस्ताक्षते शुदे निशीर्य शलानामक शिव न सुमना भव नमस्ते आयुधाय नायतदाय दक्षिणभ्य मुततेन व भामेन्द्र धन्मने मान महान्मुन् मान अर्भकम मानक्षितम मान वदीपितरमुत् मात्रमन प्रिय सन्वरुद्रीश मानस्तोके तने मान आयुषु मान गोषु मान यश्वेश्वरीश मान विरान रुद्र भाविन वधिर विश्मतः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्य भावे सेनान्य दिशांच पते नमो नमो वृक्षेभ्य हरिकेशभ्य पशूनां पते नमो नमः छस पिंजरे तुषिमते पथिनां पते नमः हरिकेशापुत हरिकेशायु पवित्रे पुष्टानां पते नमो नमः बबलुशावधिने नाम पते नमो नमः भवस्येते जगतां पते नमो नमः रुद्राय ततायने क्षेत्राणां पते नमो नमः सुताय हन्ते वनानां पते नमो नमः रोहिताय सप्ते वृक्षाणां पते नमो नमः भुवन्ते वारिवस्किता यौषधीनां पते नमो नमः मंत्रिणे वाणिज्य कक्षाणां पते नमो नमः उच्चैर घोषाय क्रन्देते पत्तीनां पते नमो नमः कृत्स्नायताय धावते सत्वानां पते नमो नमः सामान्य निव्याधिनी अव्याधिनेनां पते नमो नमः निशंगिणे ककुपसेनानां पते नमो नमः निचेरवे परिचराण्यां परिवंचते नमो वंचते परिवंचते सायुनां पते नमो नमः निशंगिणे शुद्धिमते तस्करणां पते नमो नमः श्रीकायुभ्य जिगांगुसत्वे मुष्टितां पते नमो नमः असिद्धाद्भयो नक्चरद्भयो विकृतानां पते नमो नमः नमो श्रीश्री किरीचराय कुलुञ्चनां पते नमो नमः धन्वाभ्य अतन्वानेभ्य प्रतिदेदानेभ्य च नमो नमः आश्चर्यद्भयो अस्यद्भ्य नमो वृत्सृजभ्य विद्येभ्य नमो नमः सपद्भ्य जागृद्भ्य नमो नमः शयानिभ्य आसीनिभ्य नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्य नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्य नमो नमः अश्वेभ्य अश्वपतिभ्य नमो नमः आव्याधिनिभ्य विविध्यन्तिभ्य नमो नमः उगणाभ्यस्त्री गुम हतिभ्य नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्य नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्स्पतिभ्य नमो नमः विरूपेभ्यो विश्रूपेभ्य नमो नमः सेनाभ्यो सेनानीभ्य नमो नमः रतिभ्यो रथेभ्यो शत्रुभ्यो संगतेभ्य नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्य नमः नमः सक्षभ्यो रत्कारेभ्य नमो नमः कुलालेभ्यो कर्मारेभ्य नमो नमः निषादेभ्यो पुंजिष्ठेभ्य नमो नमः श्वानेभ्यो मृगेभ्य नमो नमः शोभ्य शोपतिभ्य नमो नमः भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपते च नमः नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमः कपर्दिने च विप्तकेशाय च नमः शस्त्राक्षाय च शध्वने च नमः गिरीशाय च चिपिविष्टाय च मिदिष्टमाय च ईशुमते च नमः रस्वाय च वामनाय च नमः वेदे च वर्षे च नमः मृधाय च सवृद्धे च नमः अग्राय च प्रथमाय च नमः आशवे च अजिराय च शीघ्राय च शिव्याय च नमः ऊर्म्याय च वसन्याय च नमः नाद्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय च अपरजाय च नमो मधमाय च अपगल्भाय च नमो जगन्याय च बुधनाय च नमो सौम्याय च पतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च औसन्याय च नमो उर्व्याय च कल्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिशवाय च नमः आशुषेणाय च अशुरताय च नमः शूराय च वेदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च शुत्सेनाय च नमो दुन्दुभाय च अन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमशाय च नमः शंगिणे च ईशतिमते नमः तीक्ष्णे च आयुधिने च आयुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधने च नमः सुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च निप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमः नादयाय च वैशन्ताय च नमः कुप्याय च वट्याय च नमः वृद्ध्याय च तप्याय च नमः वेद्याय च विद्युत्याय च नमः वर्षाय च नमः वात्याय च रेशमाय च नमः वास्तवाय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगवे च पशुपते च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमः हंत्रे च हनीसे च नमः ऋक्षेभ्य हरिकेशभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवाय च मयभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्याय च वराय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः षष्प्याय च पेन्याय च नमः सिक्ताय च प्रभाय च नमः किंचिलाय च शरणाय च नमः
कपर्दिने च पुलस्तये च नमः हिरण्याय च प्रकृत्याय च नमः व्रज्याय च कुष्ठाय च नमः स्तल्प्याय च गेयाय च नमः नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः काट्याय च गविष्ठाय च नमः शुष्काय च हृदयाय च नमः पांगुं सव्याय च नमः रजस्याय च नमः लोप्याय च उलोप्याय च नमः उर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नमः उद्गुर्माणाय च भिन्नते च नमः आखिदते प्रखिदते च नमः ईशुकृभ्य धनुष्कृभ्य च नो नमः वह किरिकेभ्यो देवानागुं हृदेभ्यो नमो विंचवत्केभ्य नमः क्षिणत्केभ्य नमः आनिर्हतेभ्यः द्रापे अंधसस्पते दरिद्र नीलोहित आसाम प्रजाना मेक्षा पशुनाम भीर्मा रोगमोचन किंचिनामः इमा रुद्राय तपसे कपर दिने शहद विराय प्रभा रमे मति ही यथा शंसति पदे चतुष्पदे विष्णु कृष्ण ग्रामनस्मिन् यातुरम या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा ऋत से भेषजी तया जीव से परिनो रुद्र से हेतुर्वणतु परित्वेष से दुर्मतिर्घायो अवस्थिरम अघवत भय स्तनुष्व मृणवस्तकाय तनया मृड विरिष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव परमे विक्षायुधाय निधाय कृतिम वसा नाच आचर विना कम्बि प्रदागी विकिरिद्र विलोहित नमस्तेस्तु भगवः यास सहस्र गुम हेतयो अस्मन्न वपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रशः भावस्तव हेतयः तासामि शानु भगवः पराचिना मखकृति असंख्यात सहस्राणि ये रुद्रादि भूम्यां तेषां गुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्तरुणे अंतरिक्षे भवादि तेषां गुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि नीलग्रीवा शतिकण्ठा दिव्गुं रुद्रापिशताः तेषां गुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि नीलग्रीवा शतिकण्ठा सर्वदा समाचरा तेषां गुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि ये वृक्षेषु पिंजरा नीलगिरा विलोहिता तेषां सहस्रयोजन धन्वानि तन्मसि ये भूतानाम् अधिपते विशिखासकपर्दिन तेषां सहस्रयोजन धन्वानि तन्मसि ये पथां पथि रक्ष एल वृथा आयुर्युधः तेषां सहस्रयोजन धन्वानि तन्मसि ये तीर्थानि प्रचरन्ति सिकास्ते निशंकिणः तेषां सहस्रयोजन धन्वानि तन्मसि ये निषु विद्यन्ति पात्रेषु पीयूतो जनाः तेषां सहस्रयोजन धन्वानि तन्मसि ये तावन्तश्च भूयं गुंसश्च दिशो रुद्रे वित्तिस्तरे तेषां सहस्रयोजन धन्वानि तन्मसि नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषभ तेभ्यो दश प्राचे दक्षिणा दश पतिचि दशोर्दिचि दशोर्द्वाहा तेभ्यो नमोस्तु तेन वन्तु तेन मडियन्तु ते अन्विष्म यश्च न द्वेष्टि तमिषां जम्बे दद्मः नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये अंतरिक्ष येषां वातयिषभ तेभ्यो दश प्राचे दक्षिणा दश पतिचि दशोर्दिचि दशोर्द्वाहा तेभ्यो नमोस्तु तेन वन्तु तेन मडियन्तु ते अन्विष्म यश्च न द्वेष्टि तमिषां जम्बे दद्मः नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथ्व्यां येषां बन्धमिषभ तेभ्यो दश प्राचे दक्षिणा दश पतिचि दशोर्दिचि दशोर्द्वाहा तेभ्यो नमस्तु तेन वन्तु तेन मडियन्तु ते अन्विष्म यश्च न द्वेष्टि जमिषां जम्बे दद्मः हरि ओम वय गुम सोमव्रते तब मनस्तनुष विव्रत प्रजावंत सचिमेशि एष ते रुद्रभाग शस्त्रंबिका तनुष सुसायश रुद्रभाग गुस्त पशुः अव रुद्रमदि मह्यं देवेन्द्रमकं यथा नो वसस्कृता न शेषस्कृता नो व्यवसायात् भेषजमसि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजं सुखं मेषय मेषय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् मामुतः एतत्ते रुद्रस्य तेन परम जवतोतिः अवतत धर्म पिनाकवासः कृतिं वास अहि गुंसन्नः शिवो अतिः त्रायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषं यद् देवेषु त्रायुषं तन्नो सुतायुषं शिव नामसि स्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहि गुंसि निवर्तयाम्ये शन्नादय प्रजननाय रायसपुषाय सुप्रजास्ताय सुवीर्याय हरि ओम उग्रश्च भीमश्च ध्वन्तश्च धुनिश्च सासवंशाभि युगच विक्षिपः स्वाहा अग्निगुम हृदयना शनि गुम हृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्न हृदयं भवं एकना शर्वमत्सनाभ्याम् ईशाना मन्युना महादेव मन्तः पर्शभ्यनोग्रं देवं वनिष्ठना वसिष्ठ हनुशिंगिनी कुश्याभ्याम् उग्रं लोहितेन मृत्रगुं सौव्रत्नेन रुद्रं दौर्वत्नेन प्रकीणेन मरुतो बलेन साध्यं प्रमुदा भवस्य कंठे गुं हृदय शांत पार्श्वे महादेवस्य कृत सर्वस्य वनिष्ठुः पशुपते पुरीतद लोमभ्य स्वाहा लोमभ्य स्वाहा तुचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेधुभ्य स्वाहा मांगसेभ्यो स्वाहा मांगसेभ्यो स्वाहा स्नावभ्य स्वाहा अस्तभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा आयसाय स्वाहा प्रायसाय स्वाहा सय स्वाहा स्वाहा व्यसाय स्वाहा सौतसाय स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा तपिसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा गर्माय स्वाहा निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा वैशजाय स्वाहा यमाय स्वाहा यंतकाय स्वाहा मृत्युवे स्वा ब्रह्मणे स्वा ब्रह्म हत्याय स्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्याभ्यः पृथ्वीभ्यः गुं स्वाहा हरि ओम पाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रैतिश्च मे प्रसतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च मे अदितं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तां ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे अस्तिनि च मे परिगुं च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तां
ज्येष्ठम चमे आदित्यम चमे वनिष्ठमे भामश्चमे अम्मश्चमे अम्मश्चमे जेमा चमे महिमा चमे वरिमा चमे प्रतिमा चमे वर्षिमा चमे द्रागिमा चमे वृद्धम चमे वृद्धिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम सत्यम चमे श्रद्धा चमे जगत चनम धनम चमे विश्वम चमे महेश चमे क्रीडा चमे मोदश चमे जातम चमे जनिष्मानं चमे सुक्तम चमे सुकृतम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम ऋतम चमे अमृतम चमे अक्षयम चमे अनामेश चमे जीवातिश चमे दीर्घायुक्तम चमे अनमित्रम चमे अभयम चमे सुखम चमे शयनम चमे सुशास्त्रम सुदिनम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम यंता चमे धरता चमे क्षेमश्चमे द्वितीश्चमे विश्वम चमे महश्चमे सविश्चमे ज्ञात्रम चमे सुश्चमे प्रसुश्चमे सीरम चमे लयश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम शम चमे महेश्चमे प्रियम चमे अनिकामश्चमे कामश्चमे समनश्चमे भद्रश्चमे द्रवणम चमे भद्रम चमे श्रेयश्चमे वसीयश्चमे यशश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम ऊर्क चमे सुनिता चमे पयश्चमे रसश्चमे घृतम चमे मधु चमे सग्दिश्चमे सप्तिश्चमे कृषिश्चमे वृष्टिश्चमे जैत्रम चमे औदिनम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम रयिष्टमे रायष्टमे पुष्टम चमे पुष्टिश्चमे विभु चमे प्रभु चमे पूर्णम चमे पूर्णतरम चमे कुवयम चमे अक्षतम चमे अन्नम चमे अक्षुश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम वित्तम चमे वेद्यम चमे भूतम चमे भविष्यम चमे सुगम चमे सुपत्यम चमे रिद्धम चमे रिद्धिश्चमे कृप्तम चमे कृप्तिश्चमे मतिश्चमे सुमतिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम व्रीहयश्चमे यमाश्चमे माशाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खल्वाश्चमे प्रियंगवश्चमे अणवश्चमे क्षमाकाश्चमे निवराश्चमे गोधुमाश्चमे मसुराश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम अश्मा चमे मृतिका चमे गिरेश चमे वर्ताश्चमे सिक्ताश्चमे वनस्पतिश्चमे हिरण्यम चमे यशिश्चमे शाम चमे लोहम चमे सीसम चमे तपुश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम अग्निश्चमे आपश्चमे विरुद्धश्चमे औषधश्चमे कृष्णपचाश्चमे अतिष्ठपचाश्चमे राम्याश्चमे वशवारण्यश्चमे वित्तम चमे वित्तिश्चमे भूतम चमे भूतिश्चमे यज्ञेन कल्पताम वसुचमे वसतिश्चमे कर्मश्चमे शक्तिश्चमे शक्तिश्चमे अर्थश्चमे एमश्चमे इत्याश्चमे गतिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम अग्निश्चमे इंद्रश्चमे सोमश्चमे इंद्रश्चमे सविताश्चमे इंद्रश्चमे सरस्वतीश्चमे इंद्रश्चमे पूषाश्चमे इंद्रश्चमे बृहस्पतिश्चमे इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम मित्रश्चमे इंद्रश्चमे वरुणश्चमे इंद्रश्चमे धाताश्चमे इंद्रश्चमे त्वष्टाश्चमे इंद्रश्चमे मरुतश्चमे इंद्रश्चमे विश्वादेवश्चमे इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम पृथ्वीचमे इंद्रश्चमे अंतरिक्षमे इंद्रश्चमे द्यौश्चमे इंद्रश्चमे समाश्चमे इंद्रश्चमे नक्षत्राणिचमे इंद्रश्चमे दिशश्चमे इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम अंगुश्चमे रश्मिश्चमे अदाभेश्चमे अधिपतिश्चमे उपांगुश्चमे अंतर्यामेश्चमे ऐन्द्रवैश्चमे मैत्रवर्णश्चमे आश्विनश्चमे प्रतिप्रस्थानश्चमे शुक्रश्चमे मंत्रिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम आग्रहणश्चमे वैश्वदेवश्चमे ध्रुवश्चमे वैश्वानरश्चमे इंद्राग्नाश्चमे महाविश्वदेवश्चमे मरुत्वतीयाश्चमे केवलेश्वर सावित्रश्चमे सारस्वतश्चमे पार्थिवश्चमे हरियोजनश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम स्त्रूश्चमे समसाश्चमे वायव्यानिचमे दोणकलशश्चमे ग्रावणाश्चमे दक्षिणवचे पूतभृष्टमे आधविनीश्च वेदिश्चमे बर्हिश्चमे अवृतश्चमे स्वगराकाश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम अग्निश्चमे धर्मश्चमे अर्कश्चमे सूर्यश्चमे प्राणश्चमे अश्वमेधश्चमे पृथ्वीश्चमे द्युतिश्चमे द्यौश्चमे अंगलेशोकर दिशश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम व्रतम चमे ऋतवश्चमे सपच्चमे सर्वश्चमे ओरात्रे बृहदन्तचर्यश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम एकाचमे तिस्सचमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे पंचदश सप्तदश सप्तदशचमे नवदशचमे नवदशचमे एकविंशतिचमे एकविंशतिचमे त्रयविंशतिचमे त्रयविंशतिचमे पंचविंशतिचमे पंचविंशतिचमे सप्तविंशति सप्तविंशति नवविंशति नवविंशतिचमे एकत्रिंशतिचमे एकत्रिंशति त्रयत्रिंशतिचमे यज्ञेन कल्पन्ताम चतुर्चमे अष्टाचमे अष्टाचमे द्वादशचमे द्वादशचमे षोडशचमे षोडशचमे विंशतिचमे विंशतिचमे चतुर्विंशतिचमे चतुर्विंशतिचमे अष्टाविंशतिचमे अष्टाविंशतिचमे द्वात्रिंशतिचमे द्वात्रिंशतिचमे षट्त्रिंशतिचमे षट्त्रिंशतिचमे चत्वारिंशतिचमे चत्वारि गुंशमे चतुश्चत्वारि गुंशमे चतुश्चत्वारि गुंशमे अष्टचत्वारि गुंशमे यज्ञेन कल्पन्ताम त्रैविच्चमे त्रैविच्चमे द्वितीयवाच्यमे द्वितीयाच्यमे पंचाविच्चमे पंचाविच्चमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साच्यमे तुर्यवाच्यमे तुर्यवाच्यमे यज्ञेन कल्पन्ताम फष्टवाच्यमे फष्टवाच्यमे उक्षाच्यमे वशाच्यमे ऋषभश्चमे विहच्चमे अणवाष्टमे धेनुश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा स्वय स्वार्पते स्वाहा स्वाहा विने मुग्धाय स्वाहा वे गुंशिन नाय स्वाहा विघ्नुंचिन अंत्याय नाय स्वाहा अंत्याय भवनाय स्वाहा भुवनस्पते स्वाहाधिपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा यंतेरणमित्राय यंतासी यमनुजे त्वाविष्टे त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणियज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रयज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पतां आत्मयज्ञेन कल्पतां ब्रह्मयज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वरयज्ञेन कल्पतां पृष्ठमयज्ञेन कल्पतां यज्ञोयज्ञेन कल्पतां स्तोमश्च जुश्च ऋक्च सामच बृहच्च रतन्तरञ्च स्वर देवा अगन मामृता अभूम प्रजापते है प्रजा अभूम स्वाहा। अब अपने शिवलिंग को धो लीजिए। वॉश योर शिवलिंग्स नाउ। Okay, now we will offer clothes or cotton if you don't have anything.
अथ वस्त्रं वस्त्राणि पट्टकुलानि विचित्राणि नवानि च मया नीतानि देवेश प्रसन्नो भव शंकर इति वस्त्रम् अथोपवितं जनेऊ सौवर्ण राजतन्ताम्र कार्पसस्य तथैव च उपवितम्य दत्तं प्रत्यर्थं प्रतिगृहीतम् इति उपवितम् अथ गन्धं चन्दन सर्वेश्वर जगद्वन्द्व दिव्यासन समास्थित गंधम गृहाण देवेश चंदनम प्रतिगृहीतम् इति गंधम अथ अक्षतान राइस गंधोपरि शुक्लाक्षतान अक्षताश्च सूर्यश्रेष्ठा शुभ्रा दूताश्च निर्मलाः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर इति अक्षतान अथ पुष्पाणि फूल फ्लावर्स माल्यादीनि सुगंधिनी मालतीयदीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीतम् इति पुष्पाणि अथ बिल्वपत्रेण बेलपत्र बिल्वपत्रं सुवर्णेन त्रिशूलकारमेव च मया अर्पितं महादेव बिल्वं पत्रं गृहाण में इति बिल्वपत्राणि अथ धूपम इंसेंस अगरबत्ती धूप वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाद्यो गंध उत्तमः आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतम् इति धूपम अथ दीपम लैम्प आज्याक्तवर्ति संयुक्तं वह्निना दीपितं तु यद् दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः इति दीपम अथ नैवेद्यम अपूपानि whatever fruit or whatever भोग you have prasad you have अपूपानि च पक्वानि मंडकावटकानि च पायसं सुपमन्नश्च नैवेद्यं प्रतिगृहीतम् इति नैवेद्यम् अथ आचमनीयं वाटर टू वॉश हिज माउथ पानीयं शीतलं शुद्ध गांगे महदुत्तमं गृहाण पार्वतीनाथ तप प्रत्यय प्रकल्पितम् इति आचमनीयम् अथ करोद्वर्तनं कर्पूर कैंफर कर्पूर आदीनि द्रव्याणि सुगंधिनी महेश्वर गृहाण जगतानाथ करोद्वर्तन हेतु इति करोद्वर्तन अथ फलानि फ्रूट्स कुष्मांड मातुलिंगश्च नारिकेल फलानि च गृहाण पार्वतीकांत सोमशेखर शंकर इति फलानि नाउ तांबुल सुपारी और पान अथ सपूगी फल तांबुलादिनी पूगी फल महदिव्य नागवली दलैर्युतम गृहाण देव देवेश द्राक्षादिनी सुरेश्वर इति पूगी फलादिनी अथ द्रव्यम whatever दान you have whatever money or whatever you want to offer हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीज समन्वितम पंचरत्नम मया दत्तम गृहीतम वृषभध्वज इति द्रव्यम अथ निराजनम अग्निर्ज्योति आरती अग्निर्ज्योतिर रविर्ज्योतिर ज्योतिर्नारायणो विभुः निराजयामि देवशं पंचदीपे सुरेश्वर इति निराजनम अथ पुष्पांजलि petals offer some petals हर विश्वाखिलाधार निराधार निराशय पुष्पांजलि गृहाणेश सोमेश्वर नमोस्तुते इति पुष्पांजलिम अथ प्रणाम मंत्र now we will pray to Lord Shiva final thank you so much for coming and accepting our prayers हे तवे जगतामेव संसारान् वसतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शंभवे गुरुवे नमः इति प्रणाम मंत्र सर्व मंत्रांते सांगाय सायुराय सवानाय सपरिवराय सवर्णाय नमः इति योज्य. Okay, so when we do pranam here also Shambhave Guruve Namaha. For those who still doubt the importance of Guru, Shambhu is worshipped as Guru. Krishna is Krishna, तो Krishna बंदे जगत गुरु है ही है. Everywhere it is Guru. Without Guru कुछ नहीं हो सकता in life. So I will just do Shanti part and Swasti Vachan once because that is the ultimate blessing that we can get. Hari Oma. ऋचम वाचम प्रपदे मनु यजु प्रपदे साम प्राणम प्रपदे चक्षुश्रोत्रम प्रपदे वागो जह सहज मयि प्राणपानो यन्मे चित्रम चक्षुश्रोत्र हृदय समनसो वाति त्रिंडम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शम न भवतु भुवनस्य यस्पति भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कया निश्चित आभुक्ति सदा वृदा सखा कया शचिष्ठया वृता कस्त्वा सत्यो मदाना मंगुम हिष्टो मत संदसा दृढ़ा चिदारुजेवसु अभिषुणा सखीना भविता जैरित्रिणा शतम भव्यास्तुभिः कया तमने उत्याभि प्रमंदस्य वृषम कया सूत्रभे आवर इंद्रो विश्वस्य राजति शम न अस्तु द्विषदे शम चतुष्पदे शम नो मित्र शम वरुण शम नो भवति अर्यमा शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुकर्म शम न वाथ पवता गुम शस्त नस्तपतु सूर्य शम न कनित देवः पर्जन्यो अभिवर्षतो अहानिशं भवन्तु नः श गुम रात्रि प्रेतदाम शम न इंद्राग्नि भवता मवोभि शम न इंद्र वरुण रातभ्य शम न इंद्रा पुष्णा वाचसातो शमिंद्र सोमा सुविताय शम योह शम नो रेवि देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शम नो रविस्त्रवन्तु न स्योना पृथ्वी न भवा निक्षरण वेशन यत् छान शर्म सप्रता आपो हिष्टामय भुवस् तान दुर्जे ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षसे यो वह शिवतनो रसस्य तस्य भाजते हनः उशति रव मातरा असस्मा अरगम मां वो यस्य शया जिन्वत् आपो जन यथा च न द्यो अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि धृते द्रि गुम हम मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामि धृते द्रि गुम हम
ज्योक्ते संदृशि जी व्यासम ज्योक्ते संदृशि जी व्यासम नमस्ते हर्ष जोशिते अस्वचिसे अन्यास्ते अस्मत्त पंतु हेतयः पावको अस्मभ्य गुम शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनेते नमस्ते भगवन् अस्तु यथा अस्वा समीसे यतो यथा समीसे ततो नो अभयम कुरु शम न कुरु प्रजा अभयम न पशुभ्य सुमित्रिया न आप औषधे सन्तुर दुर्मित्रियास् तस्मै सन्तु यो अस्मान् वेष्टि यम च वयम दिश्म तत् चक्षुर्देवहितम् पुरस्ताच शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम गुम श्रेणयाम शरदा शतम प्रब्रवान शरदा शतम मदीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतशिवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु पय पृथ्व्यां पय ओषधिषु पय दिव्यंतरिक्ष पयोदा पय स्वपिः प्रदिश सन्तु मयं विष्णोररातमस्मि विशो विष्णु सपत्रे शिव विष्णु शिवरसी विष्णु ध्रुवसी वैष्णवमसी विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसुव देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाता वे नमो नमः भवे भवे नाति तद भवे भवे स्व माम बहुत भवाय नमः माम देवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बल प्रमथनाय नमः सर्वभूततमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरे अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मो विष्णु अधिपति विष्णु ब्रह्मा शिवो में अस्तु शिव सदा शिवों ओम शिवो नामसि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मामा नमस्ते अस्तु मामा ही गुमसी निवर्ते अम्य शरणाय भजनराय सुपश सुपजस्ता सूरवीर्य ओम विश्वानि देव सहितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु ओम द्या अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम सर्वेषां व एष वेदानां गुंग रसो यत् साम सर्वेषां मेवेन मेतद् वेदानां गुंग रसेना अभिषिञ्चति ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा कृतेन श्री भवानी शंकर महारुद्रः प्रियतां नमः ओम सदाशिव अर्पणम् अस्तु. For 2 minutes close your eyes and try and feel. Some of you will feel. Okay, 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे अपने मन में. You can chant Namah Shivaya, try and feel, and after that I will mention that story. Okay, अपने मन में नमः शिवाय करके just try and feel. कुछ दिमाग नहीं लगाने. Just try and absorb the vibrations so that you are ending your day on a good note and others are starting their good day on a good note. Try and feel. Om Param Tattvaya Narayanaaya Gurubhyo Namaha. If anybody had any experience, they can write in the chat. Those who want to narrate can narrate. And Gaurav ka ek simple sa. Gaurav had a simple question. So Gaurav and Vimal are very curious people, which I really enjoy because I used to be like that with my father, and somewhere they remind me of me when I was with my father. So and I know Guruji used to love it. Guruji used to love when people ask questions. And then he would also admonish me because I used to ask a lot of questions. He was like, Sadhana. So one small
snippet of his pravachan, one small, excerpt of his pravachan is what I'm going to narrate to you. Gaurav had this question. I want to learn more about Kali Ma. Which scripture? Where will I get books? And to the extent that I hope Gaurav, you're okay with me sharing this information, to the extent that he wanted to learn a particular language just to understand more about Kali Ma. So look at his level of dedication. Very, very happy to see somebody so curious. So I remember, and we were having this discussion, I think last night. So here I'm going to tell you what Guruji used to say. Guruji के पास भी लोग आते थे, you know, which book, Vigyan Bhairav, Ye Tantra, Atharva Ved, Rig Ved, Yajur Ved, all the Veds that they could read. And honestly, most of the scriptures are originally in Sanskrit. What you see in other languages are all translations. And you have to understand, Sanskrit is the kind of language where one word has multiple meanings. It is a very decorative, a very ornate language. One word has various meanings. Okay. I will explain in Hindi as well. So, गौरव का प्रश्न ये था कि काली माँ के बारे में उसको बहुत जानना था, एंड वो पूछ रहा था कि कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिसमें काली माँ के बारे में दिया गया है. मैं ये बोल रही हूँ, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें हर शब्द के कई मतलब होते हैं. संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है कि मैंने थाली बोल दी तो उसका मतलब थाली है, वो थाली के कई सारे मतलब हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जड़, जड़ का मतलब रूट भी है, जड़ का मतलब बुद्धू भी है, जड़ का मतलब इनर्ट भी है, जड़ का मतलब जो एक जगह पे स्टक हो गया. 3 मीनिंग्स ऑफ वन सिंगल वर्ड. सो जब हम कुछ भी बुक आज की डेट में पढ़ते हैं, उसको हिंदी में पढ़ते हैं, चाहे बंगाली में पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो उस राइटर का इंटरप्रिटेशन है. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुरु, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कथाकार और आचार्य. So acharyas, kathakars are people who will speak a language very fluently. They have a grasp of the language and they will interpret or literally translate something and make text about it. Gurus are not like that. Gurus have actual meditative experiences and then they write about it. Unfortunately, most gurus didn't have the time. It was not in their destiny, because if Guru को पता होता है भैया, they have to train certain disciples. Disciples are at different level of evolution. They are born to revive a particular knowledge, and that is their work. So most of them could not write books. Some of them did write book. Another thing is that when you write mantras, it can be misused by so many people. Misuse easily कर लेते हैं, use किसी को करना आता नहीं है. And in that, instead of their spiritual evolution, it leads to their downfall. So हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. गुरु जो होते हैं, जरूरी नहीं है वो बुक्स लिखते हैं. जो किताबें लिखने वाले होते हैं वो आचार्य होते हैं, तो वो संस्कृत से डायरेक्टली ट्रांसलेट करके जो है लिख देते थे, जिसमें जो उसका असली मतलब होता था वो गायब हो जाता. सो काली माँ के ऊपर आके मैं खत्म करती हूँ. काली माँ के बारे में lot of people are interested in माँ काली. बहुत लोगों को जिज्ञासा होती थी काली माँ कहाँ पढ़े, क्या नहीं पढ़े. सो गुरुजी एग्जाम्पल देते थे. सबसे बड़े काली भक्त कौन रहे इंडिया में आज तक के, और एटलीस्ट टॉप 3? Ramakrishna Paramahansa. Ramakrishna Paramahansa. I think everybody unanimously agrees. Ramakrishna Paramahansa. Trijita Baba. Trijita Baba तो मतलब पॉपुलर कल्चर में नहीं है ना. पॉपुलर कल्चर में तो Ram Prasad. He's like the pop star of Kali Sadhana, right? तो अब बताओ, Ramakrishna Paramahansa, especially for Gaurav, Ramakrishna Paramahansa was educated or not, Gaurav? Totally uneducated, unlettered. Totally, right? और काली से साक्षात बात करते थे. ये बिल्कुल उनका का भी विधान छोड़ दो, मतलब प्रसाद खा जाते थे. काली माँ के साथ खेलते थे, काली माँ की गोद में बैठते थे. हाँ, उनके साथ भोजन करती थी, साथ में भोजन, दोनों साथ में भोजन करते थे. Exactly. And रानी रासमणी जिन्होंने दक्षिणेश्वर टेम्पल बनाया था, she was a queen, she was a landlady. Yeah. So everybody was like, ये किस अनपढ़ को तुम जो है अपना पंडित बना रहे? Because lot of pandits went to her for interview. दक्षिणेश्वर टेम्पल का जो priest decide करना था, and उसमें आगे रामकृष्ण परमहंस, and रानी रासमणी selected रामकृष्ण परमहंस because she could see कि ये इंसान
एक्चुअल में काली माँ को देख सकता है, ये एक्चुअल में उनको सर्व करने के लिए है, ये एक्चुअल में सिद्ध पुरुष है. अदर्स हिज ओन काउंटर पार्ट्स could not recognize Ramakrishna Paramahansa. अब मेरा क्वेश्चन ये है, which Guruji used to say, मेरा नहीं है, these words are all Guruji's, they all belong to my father. So Ramakrishna Paramahansa ने कौन सी बुक पढ़ी थी? Which scripture did he read? I don't think so. Only his gurus were there. Bhairavi Ma was there, and there is one Aghori Guru. Totapuri. But they also came later in Ramakrishna Paramahansa's life. इनिशियल स्टेज में बचपन से ही उनको जो है विजन्स आते थे, ट्रांस आते थे, बिफोर ही मेट इवन द फर्स्ट गुरु. Correct. ठीक है. सो और जो भी गुरु मिले उस टाइम पे, गुरुज इतना लंबा लंबा टाइम एसोसिएटेड नहीं होते थे, लेटर नहीं होता, मतलब इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट. सो स्मॉल टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल रमना महर्षि किसी को देख देते थे, अपना वो जो है ट्रांसफर कर देते थे नॉलेज. सो ये वाला चीज होता था. सो ही डिड नॉट रीड एनी बुक्स, एनीथिंग, बट व्हाट ही डिड was sadhana. And personally, in my own experiences, I have had, I can't even narrate this, I will tell you on private chat, because मैं सबके सामने ये सब बताना नहीं चाहती हूँ. आप जब बहुत ज्यादा साधना करने लगोगे, and when gurus want to reveal, जब विजुअल में आपके विजन्स में क्लियरली आके यंत्र क्या, मंत्र क्या, क्या करना है, क्या नहीं करना है, देवी के कितने स्वरूप है, सबके सब आ जाएंगे. But what happens, we get so lost in translations and reading and all of this that we all have only fixed amount of time. दिन में इतना ही टाइम होता है. अब उसको हम या तो रीड करके यूज करें या हम साधना करके यूज करें. This is what I, so Guruji used to give this example कि रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा शास्त्र पढ़ा, कौन सा वेद पढ़ा, कुछ नहीं. This is what I wanted to explain. ठीक है. With this we end our session. Anybody wants to share anything, they can share. Otherwise we end the session. ठीक है, because अभी गीता क्लास शुरू होने वाला है. Okay, जय गुरुदेव.